Can my lord see me? Yes, my lord. Lords, I beg to appear on behalf of the complainant, my lords. If I could just reiterate, my lords, this is that appointment issue, my lords, where the order of the Honorable Division Bench was of April 2024, my lords. Twice the Honorable Supreme Court said, please implement it. Finally, SLP dismissed on 28th August 2024. 7 months back, SLP dismissed, my lords. Thereafter, 10 warnings have been given by my lords to the state to issue us appointment letters. 10 warnings, starting from September of 2024. Today is the 11th hearing, my lords. Either an adjournment has been sought or final chance has been given multiple times, my lords. Last time, my lords, the matter was listed on 17th February before my lords, where my lords had asked 2 questions to them that kindly complete the implementation by 15th March. And there are about 900 posts as per 17th February order, my lords, which they had to come back with. Now, today they have filed a reply, my lords, saying that we will issue appointments by the end of March. And they say that the 900 posts have expired. The question that I put to myself is, my lords, how can such a reply at all, my lords, explain the conduct of the state? When there is a specific direction by a division bench in April 24 that these 900 posts are to be included, which is it is a common vacancy, my lord, it is not a separate vacancy. There is only one notification having a common vacancy. So therefore, these 900 posts which were left vacant. As per order of Honorable Division Bench, there is no order with regard to 900 posts lying vacant. There is no order. There is no order. They say the list has to be made. You have made an argument that Alerts. There are more than 900 posts lying vacant. Indeed, my lords. But the said list has not been placed by the respondent before this court. Indeed, my lords. Therefore, this court has directed the learned counsel for the respondent to verify the above facts. Yes, my lords. And Indeed. explain the same by the next date of hearing. Yes. What they have done is two things. And he has explained that. Yes, my lords. Can I just answer? There is no 900 posts. No, that is not. They were vacant before the order passed. Before the order passed means in 2024. तो वो पोस्ट भर कैसे गई? भरी नहीं है, वो खाली थी. उसके बाद फिर वो जो पोस्ट जो वैकेंट थी वो दे हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन 1/7/2024 को वो एक्सपायर हो गई है उसकी वैलिडिटी एडवर्टीजमेंट की. इनमें अपॉइंटमेंट कभी हुई ही नहीं थी. 900 पोस्ट में कभी अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है. वो शुरू से खाली थी. that part has not been also been contested in WPS. वही तो मतलब if I can just say this, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. 1 मिनट दीजिए प्लीज. जब ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है 2 अप्रैल का, वो पूरी एडवर्टीजमेंट के साथ डील कर रहे हैं. मतलब पूरी एडवर्टीजमेंट में 900 पोस्ट इंक्लूडेड है. तो जो ऑर्डर देखेंगे मतलब डिवीजन बेंच का, उसमें लिखा है कि पूरी you have right to file rejoinder. I have a right to file rejoinder. Then can I just make one request? I'll file the rejoinder. Or for those 900 posts, I will file. I agree to that. But for the remaining, which they are accepting that they have to issue appointment letters, thrice they have told before this court that by 15th March we will complete it. My only Lordship, that was after 17th February से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ. 2025. Lordship. Lordship, in this the merit list has been and issued. This court has specific direction to comply the order passed by this court by 15th March 2025. And in this regard, what is the progress in counseling / selection / appointment be filed along with the documents and affidavit. Lordship. Affidavit file किया आप? Lordship. Documents file किया? क्या progress से बताएं? Lordship. May kindly see Lordship annexure P4, page number 9, Lordship. That was the timeline. Page number 9, Lordship, of the reply. पेज नंबर 9 की डेट भी देखिएगा प्लीज. 24 जनवरी की है लेटर. आपने 17 फरवरी को उनको बोला कि अब जो प्रोग्रेस होगा, ये 1 महीने पहले डॉक्यूमेंट लाके दिखा रहे कि हमने 2 महीने पहले ये काम किया था. मतलब वेरी सॉरी टू से मतलब, बट ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है. एक 17 फरवरी को अगर ऑर्डर पास होता है कि आप प्रोग्रेस बताइए, प्रोग्रेस में बता रहे कि हमने 1 महीने पहले डिसीजन लिया था. मतलब जैसा मैं ठीक समझ. Annexure R4. This was the timeline that was issued on 24/1/2025. इस टाइमलाइन के इशू होने के बाद there was 2025 तक करना. Lordship.
ठीक, फिर After that, the Honorable Court in WPS number 925 of 2025, they have extended the date of the counseling. The prior date of 5/2/2025 को जो मेरिट लिस्ट इशू होनी थी उसकी डेट बढ़ा के 10 तारीख कर दी. 10 तारीख अगर कर दी तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट इशू हुई वो 12 तारीख को इशूड हो गई. Thereafter, similar writ petitions of that nature, expecting the same relief, have been filed with the Honorable Court, and Honorable Court has allowed that, disposed of the writ petition, expecting from the respondent authorities to act upon it in accordance with law. The same I have written in my reply. That's why the delay which is being occurring, that is not any latency on the part of the department or any. Manoj, all this was recorded on the 17th February's order. अगर आप ही का order देखेंगे last date का, जितना भी अभी argument हो रहा है, ये सब चीज my lords के सामने था. Lordship, there were regular petitions which were coming up before the Manoj, okay. एक दिन भी division bench के order पे stay नहीं रहा, not even a single day. And उसके बाद आप September से push कर रहे हैं please कि इसको implement करिए. अब मैं request बड़ी reasonable करना चाह रहा हूँ Manoj, अगर आप उसको please consider करेंगे. The request is only this. स्टेट ने खुद कहा है कि हम 15 मार्च तक खत्म कर देंगे. मेरी रिक्वेस्ट आज इतनी है मिलोड्स कि 15 मार्च तक ये मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दें. अगर 15 मार्च तक ये नहीं देते तो 17 मार्च को मिलोड्स इनको प्लीज फिजिकली अपेयर होने के लिए और चार्जेस फ्रेम करने के लिए बुला. इनकी खुद की डेडलाइन शुरू से रही है 15 मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे. इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है कि 900 को चलिए मैं रिजॉइंडर में डाल दूंगा मिलोड्स का. लॉर्डशिप, thereafter जो टर्मिनेशन हुआ था 2600 कुछ पीपल का टर्मिनेशन हुआ था जो बीएड कैंडिडेट से. अब उनके हिसाब से जिनको अपॉइंटमेंट मिलनी है इनको अपॉइंटमेंट मिलेगी. उस पर कभी स्टेट ने डिलाई नहीं किया है. देयर आफ्टर 24/2/2025 का एनेक्जर R8 देखेंगे मैं लोग, उसमें जो रोस्टर है. मुझे बताएं डेडलाइन अभी आप जो बता रहे हैं वो जो बीच में भी एक रिट पिटीशन फाइल हो गई ना लॉर्डशिप, उसके कारण आपको डेडलाइन बढ़ गई जैसे बता. लॉर्डशिप, आप कब कंप्लाइन करेंगे? लॉर्डशिप, द टेंटेटिव डेट, बिकॉज लॉर्डशिप मेरा कॉमन बस प्रॉब्लम ये है लॉर्डशिप. करेंगे ये बताएं, पूछ रहा हूं मैं. 28 मार्च लॉर्डशिप. 28 मार्च लॉर्डशिप, उनके मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं. एक बार आप ऑर्डर देख लें. Parties at length and peruse the record with utmost circumspection. Learned counsel for the applicant contended that order of this court has not been complied with. Learned counsel for the respondent contended that order of this court will be complied with on 28th March 2025. लॉर्डशिप. Therefore, it is directed that on assurance of the learned counsel for the time is granted to comply the order of this court on or before 28th March 2025, failing which the respondent Manoj, page number shall 1 पे appear before this court personally on next date of hearing, that is 1st April 2025. और उसमें लिख देना at present 900 posts are not vacant. लॉर्डशिप, नो, दे हैव बीन विथड्रॉन. जानकारी दिया है. Thereafter लॉर्डशिप, एक और सबमिशन है जो WPS जिसको मैंने मेंशन किया है एनेक्जर R5 में, वो अभी भी पेंडिंग है. दे आर कंटेस्टिंग द अपॉइंटमेंट इन द ठीक है, सेम एडवर्टाइजमेंट. तो उनका उसमें कोर्ट का ऑर्डर ये है कि दैट विल बी टू द परड्यूसर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ दैट पिटीशन. आपने कहा लॉर्डशिप, मैंने ऑर्डर में लिखा दिया. लॉर्डशिप, अब यदि 28 मार्च तक ये कंप्लायंस नहीं हुआ तो पर्सनली अपीयर होना है. दैट्स ऑल. लॉर्डशिप, दैट आपको ये ऑर्डर समझना चाहिए और अपने ऑफिसर को बता भी दीजिएगा. जो 900 पोस्ट का मतलब लिख देंगे कि आई विल लिबर्टी टू फाइल रिजॉइंडर, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि इन वो कह रहे हैं एक्सपायर हो चुका है. इट्स नॉट वेकेंट. Want to file a rejoinder only qua the 900 with posts. regard to 900 post of 900 vacant post of the Vacant posts.
vacant post. from the same very advertisement. परमिशन ग्रांट कर दो, ठीक. So deeply grateful, my lords, deeply grateful. Published. 16.